Good morning students, class 8, chapter number 13, direct and inverse proportions. To start the chapter, firstly we discuss about word proportions. Proportion, when the two ratios are equal, then the word we use proportions. It's mean A ratio B and C ratio D, and it is the sign of proportion. When the two ratios are equal, then the word we use proportions, and for checking the proportions we use product of extreme is equal to product of mean. Now it is the word proportion. Now direct and inverse. Direct and inverse word को समझने के लिए we use some examples. Variation in one quantity bringing in variation in the other quantity. नॉर्मली हम देखते हैं कि जब दो क्वांटिटीज हमारे पास हैं और हमें एक क्वांटिटी में कुछ भी वेरिएशन क्रिएट करते हैं तो उसके क्रिएट होने से दूसरी क्वांटिटी पर भी इफेक्ट पड़े, ये नॉर्मल सी कंडीशन है. फॉर एग्जांपल, सपोज हम किसी शॉपकीपर से कुछ आर्टिकल्स परचेज कर रहे हैं. अगर हम उसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हम परचेज कर रहे हैं वो इंक्रीज कर दें, यानी कि पहले जितना आर्टिकल हम खरीद रहे थे उससे ज्यादा आर्टिकल परचेज करें, तो नॉर्मल सी बात है जो हम दुकानदार को पैसा पे करेंगे वो भी इंक्रीज होगा. यानी कि मैंने अगर एक क्वांटिटी पर वेरिएशन क्रिएट किया तो दूसरी क्वांटिटी पर भी वेरिएशन होना लाजमी है. लेकिन ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन हुआ, बिकॉज अगर मैं नंबर ऑफ आर्टिकल इंक्रीज कर रहा हूं तो टोटल कॉस्ट आल्सो इंक्रीज. सो वी कैन से दैट इट इज द डायरेक्ट वेरिएशन. नेक्स्ट, मोर द मनी डिपॉजिट इन अ बैंक. हम जैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं एंड आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब हम पैसा विड्रॉ करते हैं तो हमें ज्यादा पैसा मिलता है. तो अगर हम बैंक में ज्यादा पैसा डिपॉजिट करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट भी ज्यादा मिलेगी. हम पैसा कम डिपॉजिट करेंगे तो कम पे अमाउंट मिलेगी हमें एक्स्ट्रा. अगर हम एक वेरिएशन क्वांटिटी में एक वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं तो अदर आल्सो वेरिएशन, बट इट इज अगेन अ डायरेक्ट वेरिएशन. एंड नाउ इज अ थर्ड कंडीशन, अगर हम किसी कार की स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम पीरियड होगा, इट भी डिक्रीजेस. यानी कि अगर हमने कार की स्पीड को इंक्रीज किया तो टाइम पीरियड जो हम लग रहा है वो डिक्रीज हो गया. यानी कि एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, देन इट इज अ इनवर्स वेरिएशन. So these are word direct and inverse, and these are direct variation and it is a inverse variation. But in this chapter we discuss direct proportions and inverse proportions. So after this we discuss direct and inverse proportions, but firstly just note down it. Okay students, now we discuss about direct proportions. Direct proportions mean when the ratios are equal it is called proportions. And direct variation mean अगर हम एक क्वांटिटी में कोई भी वेरिएशन क्रिएट करते हैं, चाहे उसको इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, देन सेकंड क्वांटिटी आल्सो, इफ फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज देन सेकंड क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज, इफ फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज देन सेकंड क्वांटिटी आल्सो डिक्रीज, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन. और जहां पर ये दोनों ही मिक्स हो जाते हैं इट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शंस. फॉर एग्जांपल, सपोज इन अ कार वी यूज पेट्रोल 4 लीटर देन द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर. अगर हम 8 लीटर पेट्रोल यूज करते हैं 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होती है. 12 लीटर पेट्रोल में 180 किलोमीटर, 20 लीटर पेट्रोल में 300 किलोमीटर एंड सो ऑन. सो वी ऑब्जर्व दैट अगर हम पेट्रोल की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं देन डिस्टेंस कवर्ड आल्सो इंक्रीजेस. So it is a direct variation. But we also observe that ratio between first quantity and second quantity always same. You observe that ratio between 4 and 60, 1 ratio 15, 8 and 120 again 1 ratio 15, and similarly you observe that ratio always same between first quantity and second quantity. So it is an example of direct variation, direct proportions.
So in a question, if we check the direct proportion, then the ratio between x1 ratio y1 is equal to x2 ratio y2 is equal to x3 ratio y3 is equal to, and so on. So it is the procedure to check the quantities are in direct proportions, yes or no. So I sure the topic is direct proportion is clear. Just note down and we start exercise 13.1. Okay students, now we discuss question number 1. In the question number 1, a particular table is given in which it is parking charges in rupees and it is the parking time in hours. यानी कि हम 4 घंटे के लिए एक व्हीकल खड़ा करते हैं तो उसके लिए पार्किंग चार्ज 60 रुपीज पे करना है. फॉर 8 आवर्स 100 रुपीज, फॉर 12 आवर्स 140 रुपीज, फॉर 24 आवर्स 180 रुपीज. इट्स मीन अगर हम पार्किंग टाइम को इंक्रीज करते हैं देन पार्किंग चार्जेस आल्सो इंक्रीजेस. सो सिंपली इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, बट वी हैव टू चेक दैट इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, yes or no. So ratio between first quantity and second quantity always same. So ratio between x1 and y1, it's mean 60 upon 4. The ratio value is 15 upon 1. So ratio is 15 ratio 1. Now x2 upon y2, 100 upon 8 and 25 upon 2. So ratio is 25 ratio 2, and we observe that ratio is not same, so we can say that it is a direct variation but not a direct proportion. So answer is finally no, it is not a direct proportions. I sure question number 1 is clear, just note down. Okay students, now we discuss question number 2. In the question number 2, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base. In the following table, find the part of base and that need to be added. So in this question, it is given that mixture for prepare 1 part of red pigment and 8 part of base. So the ratio is 1:8, and for using the same ratio, we have to find out part of base. So it's mean if these are direct proportions. ये दो क्वांटिटी हमारे पास लिखी हैं, these are direct proportions, and the rule of direct proportions is x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 is equal to x3 upon y3 is equal to x4 upon y4 is equal to x5 upon y5. So 1 upon 8 is equal to 4 upon y2 is equal to 7 upon y3 is equal to 12 upon y4 is equal to 20 upon y5. Now we have to find out value of y2, y3, y4 and y5. So firstly we use the ratio with 1 upon 8. 4 upon y2 is equal to 1 upon 8. Similarly 7 upon y3 is equal to 1 upon 8. 12 upon y4 is equal to 1 upon 8. And 20 upon y5 is equal to 1 upon 8. And after cross multiply, the value of y2 is equal to 32, value of y3 is equal to 56, value of y4 is equal to 96, and value of y5 is equal to 160. So putting this value, the net answer is complete. So I sure the question is clear, just note down. Okay student, now we discuss question number 3. Question number 3, in the question number 2 above, if 1 part of red pigments require 75 milliliter of base. So we just note down a table, parts of red pigment and quantity of base.
मिलीलीटर। अगर हम रेड पिगमेंट का 1 पार्ट लेते हैं देन वी हैव टू रिक्वायर्ड बेस 75 मिलीलीटर. So for the base of 1800 milliliter, how many parts of red pigment are required? We just suppose it X2 because it is a direct proportions. So we can use X1 upon Y1 is equal to X2 upon Y2. It's mean 1 upon 75 is equal to X2 upon 1800. And after cross multiply 75 multiply X2 is equal to 1800. So value of X2 is equal to 1800 upon 75 and the answer is 24 parts. So for 1800 milliliter base we have to require 24 parts of red pigment. So I show question number 3 is clear, just note down. Now question number 4. In the question number 4 it is given that a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. So we have to find out number of bottles in 5 hours. We obviously know that if there are number of bottles increases then to fill that time period also increases, and if number of bottle decreases then time period also decreases. So it is a direct variation and we have to find out value of X2. So we use the concept of direct proportions, and the concept of direct proportion is X1 upon Y1 is equal to X2 upon Y2. 840 upon 6 is equal to X2 upon 5. 6 multiply X2 is equal to 840 multiply 5. So X2 is equal to 840 multiply 5 upon 6 and the value we obtained is 700. So 700 bottles can be filled in 5 hours. So I show question number 4 also clear of exercise 13.1. Just note down, in the next video we continue exercise 13.1. Thank you very much. And if you have any problem you can discuss with me.